myths and experiences as a woman, I think pure culture, definitely. There's a lot of talk in Insta कि हाँ ये pures इसके लिए है, या perhaps females shouldn't contest for those pures. So I think my pure was one such this कि traditionally there were not a lot of females who became TEFS managers, and I don't think that's a valid sort of perception कि हाँ बंदियाँ manager नहीं बन सकती या बंदियाँ CG या basically IBs shouldn't and do not take women. So I think that was one myth that I'm very proud to have disproved, I guess. One of the myths which I have personally been faced with was when I was planning to go for the DGSEC of this department. And the thing is कि अपने department में there have not been many female DGSECs. One of them was Kanchan 5 years back, and I am the second one in the history of the chemical department. And the myth or the misconception I faced was that अगर तुम एक ऐसी position पे हो तो you will be having to deal with vendors, you will be having to deal with other male people not inside your institute. And it might be problematic for you because either people will not take you seriously or second तुमको बात करते हैं, which I felt was very derogatory. And looking around, looking at all the females out there who are at different levels in their career, they have definitely proved that ऐसा कुछ नहीं होता है. We're capable of doing each and everything, and this misconception even inside the institute needs to be let go of. One thing that I've seen is that initially and sometimes I have seen girls are looked down upon because they're here and they've gotten the branch seats because of the supernumerary scheme. But then many of us do come on and we take up the challenge. We accomplish a lot over here, much more than many other people. So I really feel that is testament to the ability and the caliber of us. Even like probably I wouldn't say in spite of why we are here, but as a result of why we are here. अभी recent experience which I had कि I was working in a team, so I had we are the core team members and we have to convince a senior कि please take part in this program, it's coming and आप बहुत ऐसे influential हो, so you need to be in that role. तो वो मान नहीं रहे थे ड्यू टू academic commitments. some people tried convincing him but he was not ready. Then I went. मेरी convincing skills अच्छी है generally, so वो convince हो गए. और ऐसे बाद में आके जब बताया कि yes he is convinced, तो पहली line जो सुनने मिली, तुम लड़की हो ना इसीलिए. So disheartening. बहुत ज़्यादा सिंसियर और मग्गू वाइब एक्सपेक्ट करते हैं लोग बंदियों से एट IIT. मतलब कि हाँ कलर्ड पेन से लिख रहे होंगे, हेडिंग डाली होगी कलर्स में. थिंक नहीं होता है ऐसा. लड़कियों के बारे में स्टीरियोटाइप विच आई हर्ड ऑफ इन इंस्टी इज़ कि इंटर्न या POR या इन सम प्लेसेस में उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर उनको ज़्यादा अच्छे से इंटर्न या POR मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन या बॉयज़ जिनको ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है फॉर दैट POR या कंपटीशन करनी पड़ती है ज़्यादा. अबाउट इंस्टी के एक्सपीरियंसेस में इफ़ आई हैव सीन लाइक जैसे PORs में एक्सेट्रा या इन जनरल इन अदर स्फीयर ऑफ लाइफ में इफ़ आई हैव सीन विमेन बीइंग ट्रीटेड अलग से, तो मेजरली मेरे एक्सपीरियंसेस में तो नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ काउंसिल एंड बॉडीज़ जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड देयर इज एक्चुअली नो नोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज सच. One myth about women in the institute is that they don't get into the core or research fields because it is considered too technical for them. But right, I think that's not something that's always seen in the institute, and it's not something that's generalizable. In my opinion, at least out of the women students that I know, a lot of them excel at core and really at anything else that they choose to pursue. So it's not something that's generalizable, but I do think that this perception does exist in the institute and it shouldn't. There's no factual basis for it. As a female student, my parents and I didn't feel very safe going to
cities like say Delhi or smaller places or places that weren't known to be very safe for women. So part of my reason for choosing Bombay was also that. So whenever planning trips, I always have to plan it in such a way that there are girls in the group and my parents know them well. Like I cannot be the only girl in the group. Also, it's difficult to plan treks because they are considered to be tough. Of course, they are tough, but still, girls would find it much more difficult than boys to go on a trek, and that's why I'm suggested like to choose some other location and not consider treks. माझी अशी अपेक्षा आहे एक की जॉब असा पाहिजे की माझं घर माझ्या मुली मला मॅनेज करून सर्व घरचं काम करून मी इकडे येऊन जॉब केला पाहिजे व्यवस्थित. एक सुट्टीचा प्रॉब्लेम होतो मला इथे खूप. सुट्टी भेटली पाहिजे जी महिन्यातल्या 2च भेटतात तर मला हर संडे मला मुलींना वेळ देता आला पाहिजे. असा काहीतरी चांगला जॉब पाहिजे की मी मुलींना दर संडेला सुट्टी असली पाहिजे तर मी मुलींनाही वेळ देऊ शकते, फॅमिलीला वेळ देऊ शकते. करना यानी कि जैसे अपना जो मजबूरी है, जो वक्त है, वक्त में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए जॉब करना लाजिम है. और या जॉब के लिए तो ज़रूरत मतलब मुझे जैसे मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हो गई, हस्बैंड छूट गए, तो ज़रूरत तो मुझे जॉब की उसलिए पड़ी कि मुझे ही कमाना और मेरे बेटे को मुझे ही पालना, तो इसलिए मैंने जॉब ढूंढा. और ये जॉब भी है तो अच्छा ही है, जैसे कैंटीन लाइन में है, अच्छा ही है, खाना है, पीना है, सब चीज़ें, ज़रूरत भी पूरी होती है. जैसा वक्त पे मुझे कुछ चाहिए तो वक्त में पैसा आता है टाइम पे, तो कुछ ज़रूरत रहती है तो फटक से ले लो. किसी के आगे मतलब मजबूर नहीं है कि आप दो या कोई दो. मला या कामापासून मी खूप सॅटिस्फाय आहे, कारण माझी ज्या गरजा आहेत, मूलभूत गरजा, माणसाला गरज काय असते पैशाची, की कधी कोणाला 100 रुपये पण असे, आता आईवडील पण आहेत बाजूला, पण आपण मागू नाही शकत त्यांना, बरोबर आहे. जरी मागितलं ते काय म्हणतील, तुमची तुमची मुलं आहेत, तुम्ही लोकांच्या भरोश्यावर हे केलं का, मग तुम्ही काम करा, लोकांना हात पसरू नका. मग आम्ही स्वतःच्या जीवावरती खेळतो, आम्ही आमचं काम करतो, घराच्या बाहेर निघतो. पहिली गोष्ट बायकांनी काम हे केलंच पाहिजे, आहे की नाही. पण माणसांचं कसं आहे, बाई घराच्या बाहेर, माणसांना काय वाटतं ही काय काम करते, तसं नाही होत झालं पाहिजे. बायकांविषयी तुम्ही आदर निर्माण करा. जशा बायका तुम्ही कामावरून आल्यानंतर तुम्हाला कसं पाण्याचा ग्लास देतात, तसं तुम्ही पण द्या बायकांना. रिस्पेक्ट, गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बरोबर आहे. तुम्ही त्यांच्यासाठी काहीतरी करा. त्या पणच कामाला चालल्यात, घराच्या बाहेर निघतात. हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स मैं कुछ बात करना चाहूँगा आज इंस्टी स्पेसिफिक. वन थिंग मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेन शुड रियलाइज इज दैट देयर इज अ फेज फॉर इन एवरी मंथ एक बंदी के लाइफ में विच इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एवरीवन नोज अबाउट इट बट पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट, राइट. व्हाट आई फील, आई हैव सीन विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल कि the pain that they have, usually the girls, the pain that they bear is something that we can't even imagine, right? So मेरे को ऐसा लगता है कि we as guys, we as men should try to understand the problems that the girls are having at that specific phase, right? And एक और चीज़ जो मैंने observe करी is that girls usually have a high emotional quotient EQ, right? So they don't want every time that you give solutions to their problems, but they at times want just to share your problems, and you should be a good listener, because a person who has high EQ, मतलब majority of the time उसको ज़्यादा चीज़ share करने के लिए होगी. You just have to be all ears to her, right? Another thing what I want to talk about is regarding the safety. I feel Insti relatively ज़्यादा safe है from the outside world, but still it's our duty as men to make each and every girl feel safe, and she should not feel uncomfortable. Let's say जब अपने साथ hang out कर रहे हैं या अपने साथ बाहर जा रहे हैं. Happy Women's Day to all. On the occasion of Women's Day, I'm to say something that see, the thing is that the trick goes like that. If it is a human is divided into two parts. One is male, another is female. If a human can do something, that means both male and female can do the same thing. This is what we have to think as our society. Whenever you see someone, don't see it as he is a male or she is a female. See first of all that
he or she is a human being. Whenever the society will start looking into a person as a human being first, then after that gender comes, that is male or female. I think that is the most successful society that we will be having in our modern society. And also telling something in Hindi that in our culture, हमारे कल्चर में जो है एक नारी को एक देवी के समान माना जाता है. इसीलिए हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं. कभी नारी को हम लोग दुर्गा के रूप में मानते हैं, तो कभी काली के रूप में मानते हैं, कभी वो लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, तो कभी सरस्वती के रूप में मानते हैं जो विद्या देती है. तो सबको ये मेरा निवेदन है कि आप सब नारी को अपने माँ के समान देखिए, अपने सिस्टर के समान देखिए या अपने फ्रेंड्स के समान देखें, पर उनको रेस्पेक्ट कीजिए. और मैं वुमेन से भी अपील करूंगा कि इस वुमेन्स डे को कोई एजेंडा के ये में मत पढ़िए, लाइक फेमिनिज्म एंड समथिंग. यू शुड रेस्पेक्ट बोथ जेंडर, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, आई वांट टू टेल यू ऑल. थैंक यू. नमस्कार. आप सभी को वुमेन्स डे जो है हम लोग मनाने वाले 8 मार्च में, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं. हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि नारी अस्य समाजस्य कुलवास्तुकारा अस्ति, यानी महिला एक समाज की आदर्श शिल्पकार होती है. और मुझे IIT में सर्विस करते हुए 18 साल हो गए. मेरा नाम सुधीर ढोबले है, लेकिन मुझे सब लोग भाऊ के नाम से जानते हैं. आप सभी को शायद पता होगा, भाऊ इज़ अ मराठी वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रदर. तो बहुत सारे लोग जो मेरे आते हैं वो भाई के हिसाब से या ब्रदर के हिसाब से आते हैं, और इसीलिए मेरे पास अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है. और इसमें मुझे 18-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया. तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 15-20 साल से या 18-20 साल से जो पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट आती है उसमें काफ़ी सारा एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ. मैं जब ज्वाइन हुआ था 2003-4 में, तब जो लड़कियाँ आती थी जो जिनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, एकेडमिक प्रॉब्लम हो, वो बहुत डरी रहती थी और अपना प्रॉब्लम खुल के नहीं बताती थी. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल से जो लड़की आ रही है वो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से अपने प्रॉब्लम बता रही है. और सबसे मेन मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट की जो वेरियस बॉडीज़ होती है उसमें जो जनरल सेक्रेटरी होती है या जो कोऑर्डिनेटर होती है, जैसे ख्याति है या फिर कांचन है, ये सब लोग बहुत इफेक्टिवली अपना काम करते थे. और बाकी सारे बच्चों का जो भी कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए ऐसे कोशिश करती थी जैसा वो खुद का प्रॉब्लम है. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आजकल की जो लेडी स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, वो बहुत एक्टिवली लीड कर रही है, सिर्फ इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लीड कर रही है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि इसी तरीके से महिलाओं का सब जगह सेम लेवल पे प्रगति होना चाहिए, और उसी के लिए मेरी पर्सनली बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. At the outset, a happy Women's Day for everyone. At the institute level, various activities are undertaken to involve women faculty, staff and students. Various initiatives are also in progress. Even at the department level, we make conscious efforts to include women faculty, staff and students. Any award committee at the department level, we try to involve women faculty, student, staff, depending on the award. In the new building that that is being proposed for the chemical engineering and chemistry departments, we are planning to have a big resting room for women of the department. Also, in the past, a few of our faculty members have arranged several talks by women achievers of the institute. So we do make conscious efforts to involve women, faculty, staff and the students of the department, and we hope that these efforts will improve and we have more participation from women in the future. Thank you.